students, this is Priyanka Sinha from Careers Catalyst. Today I am here with next video of chapter Force and Laws of Motion. As in previous video, we already talked about force and Newton's first law of motion. Force में हमने क्या सीखा? Force is basically a physical quantity which changes or tends to change the shape, size, position, direction or speed of an object. Okay. Then we talked about Newton's first law of motion. उसमें क्या सीखा? Whenever we apply unbalanced force on any object, then we are able to do some changes there. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इट मे बी कंटिन्यू इन रेस्ट ओनली. अगर कोई मोशन में है तो इट मे बी इट विल कंटिन्यू इन मोशन ओनली. कब तक? जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते. राइट. व्हेनेवर यू अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, देन डेफिनेटली you are able to do some changes there. Means to say you are able to change the state of that material also, whether from state of rest to state of motion or from state of motion to state of rest. Here in this video we will talk about Newton's second law of motion, because first law तो हमारा हो गया अभी. We will talk about Newton's second law of motion. But before introducing Newton's second law of motion, we should know some important points and terms here. Actually there is only one point that we need to discuss before Newton's second law of motion. That is, as you can see here, that is momentum. Yes, momentum. You know, whenever we apply force on any object, then it is not necessary always कि we will observe some changes there. Sometimes we are able to observe some changes and sometimes we are not able to observe some changes. But in case of Newton's first law of motion, definitely if you are changing the state, then you need to apply unbalanced force there. Then only you will able to observe some changes. So after application of force, what are the impacts that you can see on an object will be discussed under momentum. So momentum is basically the momentum is basically the impact that you can see on any object when we apply some unbalanced force there. Okay. So momentum is what? It is the impact of motion produced by an object. Because मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है, आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर कुछ अनबैलेंस फोर्स, देन ऑब्वियसली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स यू विल एबल टू डू सम चेंजेस देयर. अगर वो रेस्ट में है तो मे बी कि वो मोशन में आ जाए. सो दैट मोशन जो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज डिफाइंड एज व्हाट? इम्पैक्ट. अभी आप फोर्स लगा रहे हो एंड एट अ रिजल्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द रिजल्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट यू कैन सी देयर? Definitely there will be some changes. That changes can be defined as impact here, and that is measured by a term which is named as what? Momentum. So whenever you are observing some impact on an object, then basically it is defined by two terms, whether by observing the mass of that object and by the velocity of that object which it will gain after application of unbalanced force. So momentum is practically the definition of momentum. अगर हम लोग बात करें तो it is what? It is the product of mass and velocity, because mass and velocity are the two factors, are the two impacts that you can see after application of force. And what will be the impact? It actually depends on two things, mass and velocity. That also you can say. अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, ये किससे पता चलेगा? उसके मास से और उसकी वेलोसिटी से. राइट. ओके. सो मोमेंटम इज प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेड एज P. Okay, we define momentum as what? P. It is the product of mass and velocity as we discussed here. So we can write it as momentum is equal to mass into velocity, where m you can consider as what? M is what? Mass, and v is what? The velocity which it will acquire after application of unbalanced force on any object. Right. Okay, so this is momentum which is represented as P. The formula of momentum is what? M into V, and where m is what? Mass, and v is defined as what? Velocity. Okay, now so momentum का definition तो clear है. It is the product of mass and velocity. Very simple definition of momentum. Momentum है क्या? तो ये impact है जो तुम किसी भी object पर देखते हो after application of force, and the parameter to measure that impact is actually depends on two things. एक तो मास पर और दूसरा उसकी वेलोसिटी पर.
Now we will talk about the standard unit of momentum. This is also very simple to find out. Mass की standard unit क्या होती है? kg, right? Standard unit of mass is what? kg. And we know the standard unit of velocity is what? Meter per second. So here we are writing so this is only the standard unit of momentum. You can say standard unit of momentum is what? Kg meter per second. Now we will talk about which actually the quantity this is. Means to say whether it is a vector quantity or scalar quantity. As we know, any physical quantity which have only magnitude is defined as what? Scalar quantity. And here if you'll observe, so this carry magnitude definitely because of mass, and because of this velocity it define direction also. So that's why momentum is a vector quantity. What you can say? Momentum is a vector quantity. So this is about momentum. Momentum किसी ऑब्जेक्ट पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ये हमने सीखा. लेट्स सपोज आपके पास एक बॉक्स है, ओके. अगर इसका मास बहुत ज्यादा है, okay, and you are applying a force of 5 Newton on this box, and let's suppose this force is unbalanced force. So definitely after application of 5 Newton force this box will move, right? This box will move मतलब इसकी velocity जो है वो क्या होगी? Change होगी, right? Now in case of this box we are taking a small object and again we are applying the same force of 5 Newton only. This time also we are applying the same force of 5 Newton only. In this case also this box will move and it will acquire some velocity here. Means to say you are able to observe some changes in the velocity of this object, because initially both was in rest. After application of unbalanced force it will move, and if it will move then obviously you can determine the velocity of that object. But किसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी अगर आपको पूछा जाएगा तो व्हाट यू विल से? डेफिनेटली द आंसर इज वेरी सिंपल. एज द मास ऑफ दिस वन, दिस जो बाद में हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है उसका मास कम है. सो डेफिनेटली इफ यू आर अप्लाइंग सेम फोर्स इन बोथ द केसेस, सो सेकेंड विल एक्वायर बोथ वेलोसिटी, मोर वेलोसिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन. लेट्स सपोज दिस एज v1 एंड दिस एज v2. सो व्हाट यू कैन से? v2 विल बी ग्रेटर देन व्हाट? v1, राइट? बिकॉज यहाँ पर इसका मास क्या है? कम है. सो ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है. इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पर कितना पड़ने वाला है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये हम दो चीजों से डिसाइड कर सकते हैं. फर्स्ट बाय मास एंड सेकेंड बाय इट्स वेलोसिटी. अगर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम एक्वायर करेगा वो, और अगर मास कम है तो इट विल एक्वायर मोर वेलोसिटी. दूसरा एक और एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको. सपोज यू हैव अ टेनिस बॉल ले लेते हैं, ओके. आप उस टेनिस बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहे हो, ओके. एंड सपोज तुमने किसी को हिट कर दिया उस बॉल से. सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगने वाली है. बट इन केस ऑफ दैट टेनिस बॉल तो बहुत हैवी होता है एज कम्पेयर टू अगर हम बुलेट जो गन के अंदर डालते हैं उसकी बात करें. सो दैट बुलेट इज ऑफ 0.5 में ग्राम में उसका मास होता है, 0.005 ऐसे केजी उसका मास होता है. वेरी लिटिल मास ऑफ दैट. बट अगर आप उसको शूट करते हो गन के थ्रू तो उसका मास तो बहुत कम है, बट द इम्पैक्ट ऑफ दैट bullet on an object will be definitely very high. Why? Because in this case we are acquiring more velocity. हमने क्या की है? मास तो कम है उसका बट हमने उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड की है. सो मोमेंटम यानी जो इम्पैक्ट होगी ऑब्जेक्ट पर वो क्या होगी? ज्यादा होगी. सो इन शॉर्ट यू कैन से द मोमेंटम, द इम्पैक्ट, the result after application of force depends on two things. First mass पर and second किस पर डिपेंड करता है? velocity पर. दोनों में से कोई भी अगर एक ज्यादा है तो you can see the large impact on an object, right? Okay. So this was momentum जो भी हमने पढ़ा. We will use this term momentum in Newton's second law of motion. Okay, because Newton ने बताया कि when we apply unbalanced force on object, then definitely we are observed to see some movement or some changes there. That changes will show some impact also, and that impact will be decided by
द मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, कि वो कितना इम्पैक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर डालने वाली है, किससे पता चलेगा? उसकी मास और वेलोसिटी से. सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू फ्यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो, so you can understand what is actually the momentum is. Now we will talk about Newton's second law of motion. Newton's second law of motion, फर्स्ट लॉ तो क्लियर है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग मोमेंटम से इसको रिलेट करने वाले हैं. दैट्स वाई वी एट फर्स्ट डिस्कस अबाउट मोमेंटम हियर. Now, as you can see, it is written here. Definitely, you need to learn this statement because it is very important. As a law, आपको ये point to point जो है वो टेक्स्ट बुक का लिखना है. Okay, so the rate of change of momentum, of a body is directly proportional to अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. ऑब्वियसली कोई भी बॉडी में अगर आप कोई चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हो, मोमेंटम में कोई चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हो, देन डेफिनेटली इट विल डिपेंड ऑन व्हाट फोर्स यू आर अप्लाइंग देयर, राइट ना. जितना फोर्स लगाओगे उतना ही मोमेंटम आपको, उतना ही चेंज इन वेलोसिटी आपको दिखने वाला है. इफ यू आर अप्लाइंग लेस अमाउंट ऑफ फोर्स देन इम्पैक्ट विल बी लेस. इफ यू आर अप्लाइंग much amount of force, then definitely impact will be more. So here in this particular law it is written that the rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force. And one more thing which we need to write here, whenever you will apply force, then definitely आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जो चेंजेस है या जो मोशन है उसी डायरेक्शन में होने वाला है, राइट. It will not in different direction. So that is also written here. When you are applying some unbalanced force on an object, then definitely there will be some change in momentum, and the force applied on a body takes place in the direction of applied force only. Okay, जो भी तुम unbalanced force लगा रहे हो, उससे जो भी changes हो रहा है, that can be seen in the direction of force only. Very simple law, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. बहुत आसान सा लॉ है. क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सीधे वर्ड में याद करना है. वन वर्ड आंसर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. दैट्स इट. एक पॉइंट याद हो गया. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. नाउ सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू लर्न, द चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व देयर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली. वेरी सिंपल. जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही चेंजेस दिखने वाला है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दिखेगा नहीं. सो दैट वी नीड टू एक्सप्लेन देयर, right? Okay, so this is the law. Now we need to explain or derive this law also. So now I'm going to derive this law. Okay, as there is less space, so I'll rub it first. Momentum is what? The product of mass and velocity that we discussed here. Now we will talk about Newton's second law of motion, derivation. Okay, उसके लिए suppose I'm taking a box here. Okay, it is kept on a surface, as this, consider this as surface. I'm taking a surface here, and we are taking a box. Let me make it little bit in left side so that we will have some space here. Okay, now this is the box. अभी बॉक्स है तो कुछ ना कुछ तो मास होगा. लेट सपोज द मास ऑफ दिस बॉक्स इज ए. अब इसका नाम भी रख देते हैं. लेट सपोज द नेम ऑफ दिस बॉक्स इज ए. So as you can see here, we have a box A having mass m. Okay, now let's consider this is in rest now. Okay, अगर ये रेस्ट में है तो obviously the velocity इसकी क्या होगी? जीरो होगी. So the initial velocity, as we already discussed in chapter motion about initial and final velocity, so we know what is u. It is defined as what? Initial velocity. So here the initial velocity of an object is what? Zero. लेट कर लेते हैं. जीरो है, ये रेस्ट में है. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अप्लाइंग सम फोर्स हियर. सपोज यू अप्लाइड सम फोर्स हियर. लेट सपोज द फोर्स इज व्हाट? एफ. नाउ डेफिनेटली इफ दिस फोर्स इज अनबैलेंस्ड, अगर ये फोर्स अनबैलेंस है तो इट विल डू सम चेंजेस इन दिस बॉक्स, राइट. सो व्हाट विल हैपन? If you are applying unbalanced force here, then after application of unbalanced force, this box will move. Okay, suppose ये box जो है ये move करके यहाँ से यहाँ पर आ गई. Definitely नाम वही रहेगा इसका A, and mass will be m only. Now
इनिशियल वेलोसिटी जो था इसका वो क्या था u. अभी जीरो हटा देते हैं बिकॉज वी आर डराइविंग दिस. सो इनिशियल वेलोसिटी वाज u, बट व्हेन यू अप्लाइड फोर्स हियर, व्हेन यू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स हियर, देन डेफिनेटली देयर विल बी सम चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी आल्सो. सो लेट्स सपोज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉक्स A is now v. पहले क्या था वेलोसिटी u, now its velocity become what v. Definitely if you are doing this changes then it will take some time also, right? ऐसे तो होगा नहीं, so it will take some time. So let's suppose this changes that you are going to observe here means to say its velocity will changes from u to v. It will take some time and consider this time as what? t. हमने इस time को क्या ले लिया? t ले लिया. And if you are changing the velocity, then velocity changes के लिए obviously इसमें क्या produce हुआ होगा? Acceleration. After producing acceleration only, you will able to change its velocity. तो suppose यहाँ पर जो acceleration produce हुआ वो भी हमने लिख लिया a. So these are the term that we are going to use in derivation of this Newton's second law of motion. किया क्या हमने? We are taking a box here, we are taking a substance or an object here having mass m and its initial velocity was what? u. Now what you did? You applied here the unbalanced force F. Because of that this box will move and उसकी जो velocity है now it become what? v. And definitely to do some changes here we will have to take some time here also. We are taking that time as what? t. And if you are changing the velocity then it will produce some acceleration. After only it will change velocity u to v. So here the acceleration produced is what? a. Now अब हम लोग क्या करेंगे? मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे पहले. सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोमेंटम. मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से. सो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, मोमेंटम क्या होती है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. एज हियर वी विल टॉक अबाउट टू मोमेंटम बिकॉज यहाँ पर मोमेंटम कुछ और होगा और यहाँ पर मोमेंटम कुछ और होगा. व्हाई? बिकॉज द वेलोसिटी इज चेंजिंग हियर. सो लेट्स सपोज इस मोमेंटम को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं व्हाट? इनिशियल मोमेंटम. ओके, सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब इसका कुछ नाम रख लेते हैं, चलो p1. इनिशियल मोमेंटम को हमने क्या कंसिडर किया? p1. सो इट विल बी व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी. इट्स वेरी सिंपल. मोमेंटम का फॉर्मूला ही है मास इनटू वेलोसिटी. सो हियर योर मास इज m एंड वेलोसिटी इज व्हाट? u. As you can see here the velocity is what? u. So the initial momentum of an object A will be what? p1. We are taking this as p1 and it will be what? mu. Now just find the final momentum also. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बताइए? फाइनल मोमेंटम को लेट कर लेते हैं, चलो p2. So it will be what? m into v. It's very simple because velocity changes from u to v. So here the final momentum will be what? mv. Now if you want to find the change in momentum, तो change क्या होता है? Final minus initial, right? So change in momentum will be equal to what? Final momentum minus initial momentum, right? It will be final momentum minus initial momentum. What is your final momentum? Your final momentum is p2 as you can see here. What is your initial momentum? Initial momentum is what? p1. So just subtract these two, p2 minus p1. Now just substitute the value of this also. It will be what? mv minus mu as you can see here. So here we got the change in momentum. Now according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum, listen, this is what? Change in momentum. If you want to find the rate of change of momentum, rate of change of momentum, then what we need to do? जो change in momentum आया बस उसे हमें time से divide करना है. So it will be what? mv minus mu by t. This is your what? Rate of change of momentum. जब आप change in momentum को time से divide करते हो, then you will get what? Rate of change of momentum. So this is your rate of change of momentum. It is what? mv minus mu by t.
as we know, according to Newton's second law of motion, rate of change of momentum is directly proportional to what? Applied unbalanced force. So here what force you are applying? You are applying force F. So you can say F, as there is less space, so I'm just going to rub this part now. Okay, so it will be easy to understand you. Yeah, now, so rate of change of momentum is what? mv minus, we got what? mv minus mu by t. This is your rate of change of momentum according to Newton's second law of motion. According to Newton's second law of motion, हमने क्या पढ़ा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में? दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है. It is directly proportional to applied unbalanced force. So as your unbalanced force is F here, so you can say F is directly proportional to mv minus mu by t, because this is your Newton's second law of motion only. Rate of change of momentum, this part is what? Rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force. So this is your applied unbalanced force. Simple. Now if you will solve it, तो देखो मैं यहाँ से सिर्फ m कॉमन ले रही हूँ. सो इट विल बी लाइक दिस, v माइनस u by t, right? And in chapter motion we already talked about acceleration, right? So v minus u by t is equal to what? हमें पता है क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है. So just substitute the value of that v minus u by t in this equation. You will get what? F is proportional to ma. अभी ये प्रपोर्शन है. अगर हम प्रपोर्शन साइन को हटाते हैं तो इन फ्रंट ऑफ दैट यू नीड टू पुट सम कांस्टेंट अलॉन्ग विथ इक्वल साइन. प्रपोर्शन को इक्वल में चेंज करना है तो उसके लिए आपको उसके साथ एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा. सो एफ इज इक्वल टू, प्रपोर्शन को हटाया मैंने, यहाँ पर वी आर पुटिंग अ कांस्टेंट दैट इज के, वेयर के इज व्हाट? कांस्टेंट. ओके, सो इट विल बिकम के एम ए. यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ के एज 1 हियर. आप के की वैल्यू यहाँ पर 1 कंसिडर कर सकते हो. देयर आर फ्यू कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, बट यहाँ पर हम के की वैल्यू अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. सपोज आपने लेट किया, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 1 न्यूटन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 kg, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Then what you will get the value of k? Definitely you will get the value of k as 1 only. That's why. So here अभी हम लोग क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं फिलहाल k को 1. So F is equal to ma. This you will get. This is defined as Newton's second law of motion derivation. This term is defined as Newton's second law of motion. अगर आप इस लॉ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, F इज इक्वल टू ma. इट वॉज वेरी सिंपल. पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, फोर्स अप्लाई किया, उसकी वेलोसिटी चेंज की, एंड देन वी चेक देयर द मोमेंटम, इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम. नाउ after that what we did, we just got the change in momentum that we can find by using final minus initial. Anywhere जब आप changes find out करते हो तो final minus initial ही करते हैं. So here also we did final momentum minus initial momentum. You got mv minus mu. Now to find the rate of change of momentum we need to divide it by t. That we did here, and after that we applied Newton's second law of motion, and you will get the formula F is equal to ma from here. Okay, so this was the derivation of Newton's second law of motion, which is actually very important. You know, बहुत important है ये, आपको एग्जाम में ये derive करने आता है. So you need to learn it and definitely practice it properly. Okay, with the statement you need to write some statement also जो मैंने पहले बताया. Let's take an object A having mass m, and these all things, whatever term that we used there, we need to define all the terms. Okay, and then we will start our derivation. Okay, now Newton's second law हो गया. Now we will talk about some application of Newton's second law of motion, where actually we use these all laws. हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज होता है ये, that we will talk. Okay, so now I'm going to rub this part first. मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. कैचिंग
अ क्रिकेट बॉल, आपने देखा होगा, आई विल एक्सप्लेन यू. एंड सेकेंड, सीट बेल्ट. वी यूज सीट बेल्ट. ओके, जब हम लोग ड्राइविंग पर होते हैं, बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चल रही होती है, तो वी जस्ट नीड टू पुट अ सीट बेल्ट. सो व्हाई यू आर पुटिंग, सो दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस हियर. यूज ऑफ seat belt. Okay, these both things actually depends on Newton second law of motion. मतलब application of Newton, as a application of Newton second law of motion, we will talk about these two things here. First, catching a cricket ball. आपने देखा होगा जब बॉल को हम लोग कैच करते हैं, then during that process when we catch the ball, then we actually move our hand in backward direction along with the ball. We just move our hand in backward direction, right? Why we are doing so, that I am going to explain here. See, suppose तुमने जब बॉल को कैच लिया, then definitely बॉल की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी. It was moving with very high speed, right? And after that, what you did, you are actually tending to stop that ball after catching it, right? So when you will do so, then definitely you are going to convert the speed of that ball to 0, right? You just are tending to change the speed of that ball from whatever be the speed to what? 0 meter per second. So to doing this, if you are actually increasing your time, then the impact of the force which will applied on your hand will be less. How it is? So उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, अपना न्यूटन का लॉ लिखते हैं. That is what? F is proportional to mv minus mu by t, right? Okay, now I'll explain you it with an example. Let's suppose the ball was moving with the speed of 50 meter per second. Okay, ball was moving with the speed of what? 50 meter per second. Now you are tending to stop that ball, then definitely you need to change the speed of ball from 50 meter per second to what? 0 meter per second. You are going to change the speed of that ball. Actually you are tending to convert that ball into rest. So for that, definitely you need to convert your speed to 0 meter per second from 50 meter per second. And suppose you are doing this particular conversion of speed in very less time. आपने जो time लिया, मान लो वो 1 second है. 1 second में ज़्यादा लिख रही हूँ, but still in 1 second you are converting the speed of ball from 50 meter per second to 0 meter per second. Now just put the value of these all. Don't take the value of m. ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग. m कुछ भी है, चलो जाने दो. मान लो m जो है वो 1 kg है, चलो ले लेते हैं. So 1 into what? v कितना है? 0 minus 1 into u कितना है? 50, and time you are taking as what? 1. Okay, so it will be minus 50 Newton, है ना? So this much force will be actually applied on your hand when you will try to stop that ball from 50 meter per second to 0 meter per second. When you will try to convert the speed of ball from 50 to 0 meter per second. अब हम लोग थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं इसी क्वेश्चन के लिए. लेट्स सपोज टेक टाइम एज 2 सेकेंड. देन व्हाट विल हैपन? सी, it will become 2, and now it will become minus 50 by 2. That is how much? Minus 25 Newton. So the force decreased to 25 Newton from 50 Newton only by increasing time, right? So same thing we are doing here. While the bowler, the batsman catches the ball, batsman नहीं, जो भी fielder होते हैं, that basically catch the ball, right? Okay, so the fielder when catch the ball, so during that period what they actually need to do, they need to increase the time, they need to increase the duration to stop the ball. वो जो भी ड्यूरेशन लेने वाले हैं बॉल को स्टॉप करने के लिए, उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है. सो व्हेन द बॉल वाज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 and if the fielder is tending to convert it to 0 meter per second, and if he or she will be take more time, then definitely the impact
ऑफ दैट फोर्स विल बी लेस. वाई? बिकॉज यहाँ पर फोर्स ही कम हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है आपके हाथों पर वो भी कम होगा. सो जब फील्डर बॉल को कैच ले रहे होते तो वो क्या करते, जस्ट टेक द बॉल एंड आफ्टर दैट दे मूव देयर हैंड अलोंग विद द बॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो दैट टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द बॉल इट विल टेक मोर टाइम, एंड अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो हमने देखा द फोर्स विल बिकम लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो फील्डर है वो बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होगा, राइट. तो उनको हर्ट ना हो इसके लिए, प्रिवेंशन के लिए वो क्या करते हैं, दे जस्ट टेक मोर टाइम टू चेंज द स्पीड ऑफ बॉल फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड. दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल जिसमें हमने सीखा कि क्रिकेटर्स जो है या बैट्समैन जो है या फील्डर जो है जब बॉल को कैच ले रहे होते हैं तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे यूज कर सकते हैं. सो हाउ वी आर यूजिंग इट हियर, वी आर जस्ट टेंडिंग टू इंक्रीज द टाइम हियर, एंड इफ यू आर एबल टू डू सो देन डेफिनेटली द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन योर हैंड विल बी लेस, राइट. ओके, सो दिस वॉज द एग्जाम्पल. आपको एग्जाम में मैथमेटिकली नहीं बट यू नीड टू राइट दिस. ओके, यू नीड टू राइट दिस. अब मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर में क्या लिखना है आपको. वाइल द फील्डर विल कैच द बॉल, देन अभी ये पहले तो फॉर्मूला लिख दोगे, देन यू विल से हियर वी कैन सी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द फॉर्मूला. Here we can say the force is inversely proportional to time. The force is what? Inversely proportional to time. So if more time will be taken by this catch bowler or sorry the cricketer, तो definitely क्या होगा, force will be reduced. As you can see, force is inversely proportional to time. So here they are just tending to increase the time. Because of that, the impact of force will be less. Okay, and obviously उससे जो आपके fielder है उनको hurt नहीं होगा. Got it? Okay, now we will talk about seat belt. We need to put seat belt when we are actually traveling in a car, right? ऐसा क्यों करते हैं? Because car is moving with very high speed, okay? And because of that high speed, definitely it gain lots of momentum. उनका momentum जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. And suddenly अगर आप कार को रोकते हो then momentum will immediately convert to zero. Why? Because the velocity becomes zero now. अभी कार मान लो 100-120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है एंड इमीडिएटली इफ यू विल टेंड टू स्टॉप इट देन वेलोसिटी विल बिकम व्हाट, जीरो. सो दिस पर्टिकुलर चेंज ऑफ मोमेंटम जो यहाँ पर आप देख रहे हो इट विल टेक वेरी शॉर्ट टाइम बिकॉज आपने सडनली ब्रेक लगा दिया. ओके, सो इन दिस सडन ड्यूरेशन में व्हेन यू आर अप्लाइंग ब्रेक हियर देन डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट जो चेंज इन मोमेंटम है उसका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, काफी कम होगा. एंड अगर चेंज इन मोमेंटम के लिए आप बहुत कम टाइम लगा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू दिस हियर ऑल्सो हम लोग इसको बात कर सकते हैं ऐसे भी कि अगर आप टाइम को घटा रहे हो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम के लिए तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और अगर फोर्स बढ़ेगा तो इफ यू आर पुटिंग योर सीट बेल्ट देन डेफिनेटली आप डैशबोर्ड पर जाके नहीं टकराओगे या फिर आपको चोट नहीं लगेगी. तो सीट बेल्ट जो है वो आपके चेंज इन मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. मतलब सीट बेल्ट से आप गिरोगे आगे बट डेफिनेटली सीट बेल्ट बंधा हुआ है तो आप धीरे धीरे आगे जाओगे. अगर सीट बेल्ट नहीं बंधा है तो इमीडिएटली जब चेंज होगा मोमेंटम तो आप डैशबोर्ड पर टकरा जाओगे, राइट. यहाँ पर क्या होगा, यू विल टेक सम टाइम. ओके, एंड टाइम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट जो यहाँ पर अप्लाई होने वाला है वो लेस हो जाएगा. गॉट इट? सो दीज आर द टू एग्जाम्पल जिसमें हमने बात की कि हाउ Newton's second law of motion is applied here. Okay, so we are using two concept here. पहले वाले में हमने क्रिकेटर वाला एग्जाम्पल देखा, जब बॉल कैच ले रहे होते हैं हम लोग तो उस टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, जो टाइम है वो बढ़ाना है. यहाँ पर भी हमें वही ध्यान रखना है, यू नीड टू इंक्रीज द ड्यूरेशन. टाइम बढ़ाओगे तो डेफिनेटली जो मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा. गॉट इट? सो वी नीड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट हियर. How can you do this? Definitely by increasing the time. In both the cases, we are increasing the time here, and because of that, you can actually change the momentum. You can actually decrease the force applied on this object after this, right? Okay. Now we will talk about how Newton's first law of motion, okay, is the special case of Newton's second law of motion. This is the last topic. Here we will talk about Newton's first law of motion is the special case of Newton's second law of motion also. Okay, so that I am going to explain here. The topic is what? How Newton's
first law of motion, how Newton's first law of motion is a special case of Newton's second law of motion. Okay, of Newton's second law of motion. How Newton's first law of motion is a special case of Newton's second law of motion. मतलब how these two are related to each other. आप ऐसा भी बोल सकते हो, how these two are related to each other. ये हम लोग पढ़ रहे हैं. How Newton first law derived the Newton second law of motion, और how Newton second law related to Newton first law of motion. That we are going to discuss here. For that, at first I'll write the derivation, the term, the mathematical term of Newton's second law of motion. Okay. So that is F is proportional to what? mv minus mu by t. Right? Okay. Now what we need to do, just change this time, just convert this time to this side, or simply shift this time to this side. Okay. So it will be ft is directly proportional to what? mv minus mu. Suppose you are not applying any force here. अगर आप कोई force नहीं apply कर रहे हो तो force की value क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. Now just put the value of force here. It will be what? 0. So it will be like this, mv minus mu. So in second case you can say mv is equal to what? mu. mv is equal to what? mu. अभी mass तो एक ही है because same object we are taking here. So here you can see v is equal to what? u. v is equal to what? u. v is equal to u का मतलब क्या हुआ? जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी है. यानी कि अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाते हो, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाते हो तो जो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वही उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी भी रहेगी. राइट. सो दिस वाज ओनली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्या था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू इन मोशन, कोई बॉडी रेस्ट में है सो इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट, until or unless any external unbalanced force is applied there. So here you are not applying any external unbalanced force, right? Because here the value of force is what? 0. So you are not applying any external unbalanced force here. So what you can say, the initial velocity and the final velocity after derivation of Newton's second law of motion, you are getting what? Equal. अगर ये equal आ रहे तो it is actually considering the condition of Newton first law of motion also. So from here you can say Newton first law of motion, from Newton first law of second law of motion we can derive Newton first law of motion also. Okay, because यहाँ पर हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं? अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या होगी? सेम होगी. राइट. ओके. So here we did this. This was the special case that you can say in which न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे रिलेटेड है हमने ये पढ़ा. न्यूटन सेकेंड लॉ से हाउ कैन वी डेराइव न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने ये पढ़ा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इफ दे विल आस्क यू देन डेफिनेटली यू नीड टू एक्सप्लेन दिस मच. आपको सिर्फ इतना बताना है. हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. देन एट लास्ट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी बोथ आर इक्वल. मीन्स टू से you are not changing the speed of an object, whether it is in rest so it will continue in rest, और अगर ये motion में था तो it will continue in motion only with same speed. Why? Because you are not applying any external unbalanced force. Okay, so hope this is clear to you now. ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा. एंड in next video we will talk about Newton's third law of motion. Okay, so I'm concluding this video here only. In next video we will talk about Newton's third law of motion. Thank you.